अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? यस, थैंक यू बेटा फॉर आस्किंग. आई एम ऑल्सो फाइन. थैंक यू फॉर योर कंसर्न. ओके बेटा, चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, योगर्ट जो है इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट. आउटलाइन द रोल ऑफ माइक्रोब्स in the process of yogurt production. ठीक है. अच्छा बेटा, अब जो है हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स? दिस इज फॉर 5 मार्क्स. तो हमने ये क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स के लिए. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इसमें जो है वी हैव टू आउटलाइन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं कौन से हम यूज करते हैं व्हाइल मेकिंग द योगर्ट. इसमें जो है बेटा हम लैक्टोबैसिलस, we use two type of microbes, streptococcus and lactobacillus. right, इसमें हम बेटा lactobacillus species यूज करते हैं. right, और जो सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं which are used in the formation of the yogurt, these are the streptococcus species. These two type of microorganisms are used in yogurt making. अच्छा, अब बेटा ये जो microorganisms we are adding, how are they going to help in producing yogurt? ये किस तरह help करेंगे? अच्छा, ये जो है बेटा they will carry out anaerobic respiration, right? Or during anaerobic respiration, what will they do? They will convert lactose, sugar which is present in the milk, lactose in milk into, this is K. Okay, they're going to convert lactose which is present in milk into lactic acid. ठीक हो गया. अच्छा, अब lactic acid की वजह से what will happen? Lactic acid की वजह से it also reduces the pH because acid is being produced. अच्छा, और ये जो acid होगा, this lactic acid will react with lactic acid. It will coagulate milk proteins. Right? So this is how they help in प्रोड्यूसिंग द योगर्ट. अच्छा, अब बेटा इसमें जो है हमने योगर्ट प्रोसेस का पूरा जो योगर्ट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. दिस इज द जनरल एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर 5 मार्क्स. यू आर गोइंग टू राइट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दिस विल गिव यू 1 मार्क एंड देन दे कैरी आउट anaerobic respiration. राइट. अच्छा, इसमें जो है बेटा यू आर गोइंग टू राइट डाउन द माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरी आउट दिस प्रोसेस. दे आर द लैक्टोबैसिलस स्पीशीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस. This will give us 1 mark and they carry out anaerobic respiration, or you can write down the fermentation. This will give you another mark. And then they convert lactose milk into the lactic acid, 3rd mark, and which reduces the pH. And this lactic acid produced, it reacts with the proteins and it causes the coagulation or clotting of the protein in the milk. Right, these are the 5. अच्छा, इससे पहले जो है बनाने से पहले बेटा हमने क्या करना होता है? हमने जो है मिल्क को वार्म करना होता है, हीट करना होता है.
राइट, हीट करना होता है और पैस्चराइज, pasteurization is important and purpose of this is to kill already present microbes in the milk so that they should not contaminate or they should not grow instead of the lactobacillus and streptococcus bacteria, right? And then after heating, what we have to do after heating, we have to warm or maintain the temperature. We have to maintain optimum temperature, right, by cooling down this heated milk. And then we also have to provide the anaerobic conditions. And aerobic conditions are also important for producing the yogurt, right? So this is how you're going to write down. First आप बेटा यहाँ से start कर लें that we have to heat the milk. Heating से क्या होगा, जो already present इसके अंदर microbes and they will be killed. Then we have to warm or then we have to cool down that heated milk to provide the optimum temperature, 37, 35 or room temperature. And then we also have to cut down the oxygen supply to provide the anaerobic conditions as these bacteria carry out anaerobic respiration and they produce the lactic acid, right? Otherwise, अगर हम start से यही वाले steps लिख लें which I have written in the beginning, that is also good. ठीक है. अच्छा, अब हम इसका बेटा second part देखते हैं. The diagram shows a food label from a pot of yogurt. So energy जो है बेटा, it has 344 kilojoule of energy. Let's see which products, which constituents are present here. अच्छा, energy जो है overall it is 344 kilojoule per 100 grams of yogurt. Fat is 4.5 grams. Total carbohydrates 5.5 grams. Sugar is 5.5 grams. Sugar, okay, sugar, carbohydrates, then fiber. Yes, see here, fiber are actually 0, no fiber. Then proteins are 4.2. Proteins are 4.2, salts are 0.1, and it also has calcium 0.125 grams, and water is also 81%. So this is the nutritional value of the yogurt. Let's see what is the examiner asking. Yogurt can contribute to a balanced diet. It can contribute to a balanced diet, but adult humans cannot survive by eating only yogurt, right? Explain the statement using the information on the labels. It can contribute to a balanced diet. अच्छा, पहले हम इसका आंसर करते हैं. Then why the humans cannot survive, then we are going to answer this part in the question. Let's see, this is for 5 marks, right? तो हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह लिखना है. Why this is contributing to the balanced diet. इसमें आप देखें बेटा, it has carbohydrates, ठीक है, carbohydrates, sugar, it has carbohydrates. अच्छा, इसके अलावा इसके पास it also contains proteins, it also contains fats, ठीक है, it also contains calcium, it also contains water. ठीक है, हम पहले इसका कॉन्स्टिट्यूट देख लेते हैं. इसके अंदर वाटर है, कैल्शियम है, ठीक है, सॉल्ट्स भी हैं, सॉल्ट्स में मेंशन कर लेते हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स भी हैं, ठीक है. अच्छा, और हम यहाँ पर सॉल्ट्स भी बेटा लिख लेते हैं. इट ऑल्सो हैज सॉल्ट्स. ड्यू टू दीज पार्ट्स इट इज कंसिडर्ड अ बैलेंस्ड डाइट. बट अच्छा, आपने बेटा कंपोनेंट्स लिखने हैं एंड देन वी ऑल्सो हैव टू राइट डाउन द functions of these components. Component plus function will provide us 1 mark. और अच्छा, इसमें बेटा they are asking why it is being contributed, it is contributing in the balanced diet because of these constitutes. और उसके बाद जो बेटा इसका second part है, why it cannot be human, right, and why humans cannot survive by eating only yogurt. हमने इस part को भी answer करना है. Only writing 5 points or 6 points from this first part will not give you 5 marks. ठीक है, अभी हम बेटा फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स लिखे हैं. So just writing 6 points from the first part is not going to give you the 5 marks. Both parts are important for gaining the 5 marks. ठीक है, एक में से आप 2 कर दें, एक में से 3 कर दें,
That is good, but 5 जो है from one part will not give you the 5 marks. अच्छा, carbohydrates जो है they are source of energy. ठीक है, हम energy लिख देते हैं. Source of energy. Proteins जो है they are required for making amino acids. Sorry, proteins जो है यहाँ पर हम प्रोटोप्लाज्म या न्यू सेल्स कर देते हैं. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और न्यू सेल्स. अच्छा, और इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, तो वो भी हम पार्ट कर लेते हैं. जो मेन है दैट इज द न्यू सेल्स और ग्रोथ. ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. फैट्स दे प्रोवाइड एनर्जी. अच्छा, एनर्जी के अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन, ये भी हो गया. कैल्शियम इट इज रिक्वायर्ड फॉर बोन, स्ट्रेंथनिंग द bones and teeth, and water that is required for hydrolytic, or you can write down the chemical reactions inside the body. Then salts, they help in maintaining the pH of blood, right? So because of these parts, it's considered the balanced diet. Second is why humans cannot survive by eating only yogurt. अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं बेटा कौन सी चीज नहीं है. इट डू नॉट हैव एनी ऑफ द विटामिन हियर. ठीक है, कोई विटामिन नहीं है. ए बी सी डी ई, वी कैन नॉट सी एनी ऑफ द विटामिन हियर. अच्छा, इसके अलावा आप देखें जो इसमें बेटा कैन यू सी हियर फाइबर्स. फाइबर्स आप देखें इसमें बेटा, फाइबर्स जो हैं 0 है. इट मींस इट हैज नो फाइबर्स. तब हम नीचे लिखते हैं व्हाई इट्स नॉट कंसिडर्ड द गुड बैलेंस डाइट. सेकेंड पार्ट है इसका. ठीक है, इट हैज नो फाइबर्स. Fibers, it can lead to constipation. It can cause constipation. ठीक है, सेकेंड हम आप देखते हैं इसमें बेटा क्या चीज नहीं है. They do not have any of the vitamin, no vitamin. अच्छा, स्पेसिफिक हम कर लेते हैं, विटामिन सी कर लें, विटामिन डी कर लें. इट्स अप टू यू. ठीक है, फिर हम उसी का ही फंक्शन बताएंगे. इट हैज नो विटामिन, विटामिन्स, और इट हैज नो विटामिन सी कर लेते हैं. ठीक है, और विच कैन सी जो है. अच्छा, देन इसके बाद नो स्ट्रॉन्ग एपिथेलियल सेल्स. देन विटामिन डी भी आप कर लें, नो विटामिन डी. इट हैज नो विटामिन डी. ठीक है, वीक बॉन्ड्स और नो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. या इसमें आप स्पेसिफिक कर दें नो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. Absorption of calcium from small intestine to blood, right? अच्छा, और इसके अलावा no epithelial cells या poor epithelial cells. epithelial cells and scurvy आप इसको कर लें. ठीक है, या might lead to scurvy. स्कर्वी, राइट. अच्छा, और इसके अलावा यस बेटा, इट ऑल्सो डू नॉट कंटेन्स आयरन. आयरन इसके अंदर नहीं है, सो आयरन कैन लीड टू नो आयरन. इट डू नॉट कंटेन्स नो आयरन, राइट. नो आयरन की वजह से लेस रेड ब्लड सेल्स, लेस हीमोग्लोबिन, और इट माइट लीड टू अनीमिया. बेटा डिजीजेस पे हम ना जाएं, डिजीजेस से पहले आप इनके जस्ट फंक्शंस बता दें. ठीक है, फॉर विटामिन सी नो एपिथेलियल सेल्स, नो गुड ग्रोथ, और इसमें आयरन की वजह से जो है देयर विल बी नो हीमोग्लोबिन, नो रेड ब्लड सेल्स, और एंड पर हम अनीमिया के ऊपर जाएं, बट दैट विल बी मोर देन द रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब हम इसको दोबारा देखते हैं. इसमें जो है दे आर आस्किंग व्हाई योगर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट हमने टेबल से ही बेटा हेल्प लेना है. इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स, नो नीड टू राइट डाउन what amount of carbohydrates are present there. और साथ में आपने एक फंक्शन इसका लाजमी मेंशन करना है. constitute plus function will give you 1 mark. अच्छा, carbohydrates are required for energy, proteins are required for making new protoplasm, new cells, or it's required for growth. 1 is sufficient. Fats are required for providing energy, or they also provide insulation. Calcium, it is required for the strengthening of the bones. Water, it's required for chemical reactions. Salts are required for maintaining the pH of the blood.
अच्छा, इसमें हमने सारे जो है बेटा फर्स्ट पार्ट के नहीं लिखने फॉर बैलेंस डाइट। सो हियर आई हैव एक्सप्लेन 6, तो 6 जो है आर नॉट गोइंग टू गिव अस 5 मार्क्स। ठीक है, हमने दोनों पार्ट्स पे डिस्क्राइब करने हैं, एक पार्ट में से आप 3 कर लें, सेकंड पार्ट में से आप 2 कर लें, इतना 5 है। बट आई हैव आस्क्ड कि आपने हमेशा जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी लिखना है एज देयर इज सफिशिएंट स्पेस। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है women adults cannot survive by eating only yogurt, इसका रीजन ये है do not have fibers, so it can lead to constipation, no vitamin C, which there will be poor epithelial cells growth and no vitamin D, then there will be no absorption of calcium from small intestine to blood, no iron, anemia। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम डिटेल में देखें तो और भी इसमें विटामिन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट दीज फॉर इन द सिलेबस एंड दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, 4 यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किए हैं, 6 मैंने ऊपर डिस्क्राइब किए हैं, तो ये हमने 10 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिया। 5 आर रिक्वायर्ड, हमने 10 मार्क्स का कर